crafties, this is the last part of our art studio। तो आज हम एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं और अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए 2 वेस्ट बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को कट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग आप कितना मेजरमेंट रख सकते हैं, कितना बड़ा भी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। जो प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिख रही है वैसे ही आपको अपना ऑर्गेनाइजर बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक वॉलपेपर लिया क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप यहाँ चार्ट पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं या नॉर्मल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप उस पर उसके बाद थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में, तब तक आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो गाइज मेरा यहाँ आर्ट स्टूडियो बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।